Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar and this is our session number 3 on ThrowBack 2019. ThrowBack 2019 are wonderful GK revision modules. For 2019, entire 1 year is what we are covering in many modules, and we are just trying to cover some important aspects so that you can revise your current affair in a very meaningful manner. Okay, this is our third session. In our second session, we talked about reports and indices part 1, and I'm covering this is part 2. Here I'll be covering entire reports and indices. I'm sure all of you must have been enjoying this entire series with us. Okay, so let me start to talk about all these issues one more time. So environment performance index, ठीक है, आपको याद होगा हम बात कर रहे हैं कि हम इंडेक्स के बारे में. इंडेक्स में आपको याद रखना है दैट व्हाट इज दिस इंडेक्स नेम, हु डेवलप्स दैट इंडेक्स एंड व्हाट इज इंडियाज रैंक. ओके, दिस आर द इंफॉर्मेशन व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. ओके, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विथ World Economic Forum. India's rank in it is 177 out of 180 countries. We slipped from an already very low rank of 155. Environment Performance Index, India is not doing good. Okay, this is World Economic Forum की तरफ से आता है. India slipped 21 places and World Economic Forum's Global Gender Gap Index 208 position. ठीक है, so this is very critical. Iceland is at number 1. Okay, followed by Norway, Finland, Rwanda and Sweden. Okay, while India is at 108th position. We are behind China and Bangladesh. It is developed by World Economic Forum Global Gender Gap. That means there is a gap between gender, male, female, and we are not giving a lot of opportunities in terms of health, education, workplace, and political representation to women. Primer, that's the basically a problem. Okay, coming to World Economic Forum ranks India at 62nd among the emerging economies on Inclusive Development Index. Inclusive Development Index, that means we are including everyone in the growth of the country. सबका साथ सबका विकास, ये विचार के साथ हम आगे बढ़ रहे थे. ठीक है, और इस विचार में India is at 62nd position. Last year we were at 60th position. This year we are at 62nd. So हम जो सोच रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, वो हो नहीं रहा है. लिथुआनिया is at the top position. North African country लिथुआनिया 62nd place में इंडिया है. China is at 26th position while Pakistan is at 47th position. ठीक है, similarly India is ranked 78th among 114 countries in World Economic Forum's Energy Transition Index. Energy Transition Index, that means how swiftly, how easily we are, you can say, shifting from fossil fuel to new renewable energy, where we are talking about environment sustainability. So India का rank उसमें 78th है. ठीक है, this report is titled as Fostering Effective Energy Transition. Top 3 countries are Sweden, Norway and Switzerland. India ranks, ठीक है, in Global Competitiveness Index at 40. ठीक है, इंडिया का रैंक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 40 है. लास्ट ईयर 39 था, हम गिरकर 40 पे पहुंच चुके हैं. नंबर 1 स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 यूएसए और नंबर 3 सिंगापुर है. ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ कॉम्पिटिटिव इंडिया इज. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ग्लोबल टैलेंट Competitiveness Index, which is prepared by INSEAD Business School in partnership with Tata Communication and Adecco Group, was released on the first day of Davos Summit. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एवरी ईयर डेवोस में एक मीटिंग होती है और यहाँ पे इंडिया का रैंक है 80th. वर्ल्ड में टॉप में आता है स्विट्जरलैंड, फॉलोड बाय सिंगापुर, यूएस, नॉर्वे एंड डेनमार्क. दे आर द टॉप 5. व्हाइल इंडिया इन अ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में वी आर एट 80th पोजीशन. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इज एट 57th आउट ऑफ 130 कंट्री. टॉप 10 कंट्रीज में पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे नीदरलैंड, स्वीडन, यूके, सिंगापुर. ये रहे आपके टॉप 5 और उसके नीचे आपके सामने टॉप यू कैन से 10 दिख रहे हैं. इंडिया मूव्ड अप 3 places in comparison to 2017. 2017 के कंपैरिजन में हमने करीबन 3 पायदान
ऊपर उठे हैं. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ओके, इंडियाज रैंकिंग इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वेंट अप बाय जस्ट वन रैंक 238. ठीक है, इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया, पर इस प्रोग्रेस में हमारा रैंक इतना बड़ा नहीं है. ठीक है, this HDI is developed by United Nations Development Program. This is one of the very important program of United Nations. UNDP बोलते हैं इसको. श्रीलंका का रैंक 76th है, मालदीव्स at 101, बांग्लादेश and Pakistan are 136 and 150 respectively. The lowest one is Niger and the top one is Norway. ठीक है, coming to our own index called Andhra Pradesh secured the top post in ease of doing business. You can say that this is a ranking of states and union territory developed by World Bank and DIPP. Okay, top 5 states के बारे में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड एंड गुजरात. ठीक है, सरप्राइजिंग झारखंड is at top position, while bottom 5 are Meghalaya, Arunachal, Sikkim, Manipur and Mizoram. Okay, these are the, you can say, bottom 5. Okay, so these are the very important one which you need to remember. Okay, आगे बढ़ते हैं. Ministry of Commerce and Industry released first ever states startup ranking 2018. स्टेट की स्टार्टअप रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है गुजरात. उसके बाद आता है कर्नाटका, केरला, राजस्थान, ओडिशा. दे आर द टॉप परफॉर्मर्स, while the leaders are Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Telangana. Okay, primarily this is for encouraging states to talk about startup. Okay, Andhra Pradesh once again topped the chart in terms of ease of living index. Okay, this is launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, दे आर द टॉप वंस. ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जहां पे रहने के लिए कौन सी अच्छी जगह है उस मुताबिक आता है. Kerala and Himachal Pradesh are progressing at the faster pace towards sustainable development goals set by 2030. I'm sure you know SDG, Sustainable Development Goals. There are total 17 goals developed by United Nations. United Nations का टारगेट है कि by 2030 वर्ल्ड में ये 17 गोल अचीव होने चाहिए. उन 17 गोल्स में, ठीक है, इंडिया इज वर्किंग वेरी हार्ड. नीति आयोग इसके ऊपर इंडेक्स बनाते रहता है. ठीक है, ओवरऑल इंडिया का स्कोर 57 आउट ऑफ 100 है और उनमें सबसे टॉप में केरला और हिमाचल प्रदेश और बॉटम में यूपी, बिहार और आसाम है. ठीक है, हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट डेवलप्ड बाय नीति आयोग. ठीक है, वेरिन केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु आर द टॉप रैंकिंग स्टेट्स. ओके, दिस इज हेल्दी स्टेट्स progressive India report. You can say in assistance with World Bank, Niti Aayog is developing this. So this is wonderful, you can say, ranking which is coming. And then very important report developed by United States of America का एक NGO है, non-profit organization, जो ये बनाता है. ठीक है, this is called World Justice Project. World Justice Project is an independent multidisciplinary organization working to advance rule of law across the world. This is very important. Okay, World Justice Report. World Justice Report 17-18 का आया था. उसके अंदर इंडिया का रैंकिंग है 62nd. It is better than China, Pakistan, Myanmar and Bangladesh. ठीक है, here Denmark occupied the top post. Here what are we talking about? We are talking about fundamental rights कैसे है. ठीक है, is there any discrimination is taking place? How is right to life and security? Due processes are applied or not? Freedom of expression, religion is there or not? Right to privacy, freedom of association, labor rights कैसे है, ये सब यहाँ पे डिफाइन होता है और उसके मुताबिक रैंकिंग दी जाती है. और इंडिया इज एट 62nd पोजिशन. एनुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रैंकिंग दी जाती है और इंडिया आउट ऑफ 50 इकोनॉमीज में से 36th पोजीशन में है. इंडिया इज एट 8 प्लेसेस अप. ठीक है, 8 प्लेसेस इंडिया ऊपर आया. ठीक है, लास्ट ईयर इट वाज 44th पोजीशन, इस बार वो 36th पोजीशन पे आया है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आई एम श्योर यू नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड टू पेटेंट्स, कॉपीराइट and what else? Please tell me those. Okay, what are the important points covered under intellectual property rights? ठीक है, India dropped in 2 places or dropped by 2 places in global press
फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है. दिस इज रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आर रिलीजिंग दिस कॉल्ड ग्लोबल प्रेस freedom index. India is at 148th position. Norway is at the top position. Third time Norway is coming at the top position. This is India at 148th position. South Asia के अंदर पाकिस्तान is at 142nd position और बांग्लादेश is dropping to 4 places to 150th. They are the bad examples of, you can say, journalists, okay, where how journalists are being provided complete security, ठीक है, how is the authoritarian regime is working, ठीक है, how government is tightening their grip on the media, ये सब चीज़ें इसमें काउंट होती है और they are bringing this global press freedom index, ठीक है. तो आप बताइए मुझे प्रेस फ्रीडम डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है, ठीक है. चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल नंबर 3. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव लर्नड इट वेल, ठीक है. रिपोर्ट्स और इंडाइसिस ज्यादातर जो भी महत्वपूर्ण थे सब मैंने यहाँ पे कवर किए हैं. दिस इज द सेकंड मॉड्यूल एंड इन दिस सेकंड मॉड्यूल आई हैव कवर्ड एंटायर एस्पेक्ट ऑफ 2019. Just you can say, do not miss out to go through our throwback 2019, the entire series, and I'm sure you will have extra edge than a lot of other friends. Okay, so make sure that you get this advantage from ProTalent. Thank you very much and all the best.